पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की मारूफ इस्लामिक कैलीग्राफर शाजिया जबी के फ़न पारों की न्यूयॉर्क में खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया गया। न्यूयॉर्क में शाजिया जबी के फ़न पारों की नुमाइश में पाकिस्तानी कौंसल जनरल आमिर अहमद अतुजई, असम्बलीमैन स्टीव स्टर्न, टाउन ऑफ बेबलॉन के सुपरवाइज़र रिक शेफर, कौंसल वुमेन टाउन ऑफ हंटिंगटन थ्रीसा मरी और टाउन ऑफ हंटिंगटन के टाउन क्लर्क एंड्रयू रिया के अलावा पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की अहम शख्सियत और अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नुमाइश में शाजिया जबी के इस्लामिक फ़न ख़ताती के फ़न पारे रखे गए, जिन्हें देख कर शुरका मुतासर हुए और उन्होंने शाजिया जबी की फ़नकाराना सलाहियतों को काबिल सताइश करार दिया। नुमाइश का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। शाजिया जबीन ने अमरीकी मेहमानों समेत शुरका को खुश आमदीद कहते हुए कहा कि उन्होंने किसी अदारे से फ़न ख़ताती की बाकायदा कोई तालीम व तरबियत हासिल नहीं की। उनका कहना था कि वो अपनी खुदादाद सलाहियत से अमरीका में इस्लामिक कैलीग्राफर का फ़रोग चाहती हैं। मैं एक इस्लामिक कैलीग्राफर हूँ एंड आई माई रियली गोल इज़ टू प्रमोट इस्लामिक आर्ट इन अमेरिका। कैलीग्राफी जहाँ तक सीखने का सवाल है, वो मैंने बाकायदा उसकी कभी कोई क्लास नहीं ली है। ये मेरा अपना टैलेंट है अल्लाह की तरफ से, और इसमें काम कर रही हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोगों को बहुत पसंद आता है मेरा आर्ट वर्क। बेसिकली मेरा गोल ये है कि मैं अमेरिका में इस्लामिक आर्ट को प्रमोट करूँ, तो इसके लिए मैंने पहले काफ़ी सेवरल ईयर्स से एग्ज़िबिशंस करती जा रही हूँ और बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पांस है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कौंसल जनरल अतुजई का खिताब करते हुए कहना था कि शाजिया जबी के फ़न पारे फ़न ख़ताती के आला नमूने हैं, जिनमें बहुत गहराई और मानी वाज़े हैं। Each piece I found to be arrestingly charming, and having looking at each piece, it invites you to dive in, and there is so much meaning and symbolism in there. And of course, when you come out, so you find that there is a lot of quality added to your person. स्टेट असेंबलीमैन स्टीव स्टर्न, सुपरवाइजर रिक शेफर, कौंसल वुमेन थ्रीसा मरी और टाउन क्लर्क एंड्रयू रिया ने शाजिया जबी के फ़न पारों को अमेजिंग करार देते हुए कहा कि न्यूयॉर्क की सकाफत में हर सकाफत और फ़न का फ़रोग बड़ी अहमियत का हामिल है। इस सिलसिले में शाजिया जबी की खिदमात काबिल सताइश हैं। Last time around, like everybody, there was a piece of Shazia that struck me, that was meaningful to me. I think it's really cool too. I think it strikes everybody, but it was meaningful to me. And it hangs in my assembly office, not just as a work of a friend, but because I think it's important for us as representatives of our community to showcase not just important artwork, but important messages that apply to us all. I'm Huntington Town Clerk Andrew Raya, and this is truly a pleasant surprise. I've known Shazia in other ways with her work in the community, and had no idea she was such a prolific artist. My name is Rich Schaefer. I'm the Babylon Town Supervisor, and we're very proud to host Shazia's art show here and all of her creations. I'm just blown away by her talent and the fact that she was never educated about painting and creativity, but this is just all of her natural talent. I knew that she was a woman of many talents. I didn't realize that she was a woman of artistic talent here, and so we're really proud to be able to sponsor this today and hope to see her again. Hi, my name is Teresa Mari. I am a Huntington Town Councilwoman, just elected this year, and I met Shazia at several months ago at her home. I was there for a meeting, and I'm looking at her work. It's absolutely beautiful. Her work is amazing, and she has so many meaningful pieces. She should be so proud. It's beautiful, and I'm in awe of her talent. नुमाइश में मौजूद पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की अहम शख्सियत की जानब से भी शाजिया जबी के फ़न पारों को अमरीका में इस्लामिक कैलीग्राफी और इस्लामी तालीमात के फ़रोग का अहम ज़रिया करार दिया गया। And amazing work, so I like her work, and the way she is putting her effort in Islamic art is incredible. Thank you. और ये
بہت متاثر ہوا ہوں میں ان کی اس آرٹ ورک سے، اور انہوں نے جو اسلامک چیزوں کو جس انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں، جس طرح ایک ایک چیز پر اتنی محنت کر کے جو کام کیا ہے، یہ بہت ہی قابل ستائش ہے. And I think that this is such a nice way to showcase Islamic calligraphy and Islamic art and promote diversity and promote these different, ways of seeing our culture and our religion. So یہ جو شازیہ نے کیلیگرافی کا شروع کیا، یہ ماشاءاللہ عرصے دراز سے اسلامی جو تحریریں ہیں ان کو لکھا جاتا تھا، اور جس طریقے سے اس نے اس کو پیش کیا ہے، اور یہ اس اپنی، یہ آپ دیکھیں پکچر سے اتنا پتہ نہیں لگے گا، اگر آپ خود دیکھیں تو آپ کا معلوم ہوگا، اتنی زبردست طریقے انہوں نے پیش کیا ہے کہ ماشاءاللہ جو بھی دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شازیہ کسی اسکول نہیں گئی، کہیں جا کے سیکھا نہیں، اور یہ خود ہی اس کے اندر اپنا اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے کہ اس نے خود یہ سارا کچھ کیا ہے. تو has been building a bridge between the Muslim community and the American community for us. Or it's amazing gift that she has with the calligraphy and Islamic art. And our community, I think we should all support her wholeheartedly. We should turn out and because she represents us, our community, our Muslim community. اور اس کی پینٹنگ جو ہے، اس کا آرٹ جو ہے نا، آپ یقین کیجئے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے آرٹ کرتے ہوئے، آرٹسٹوں کو. آپ اس کو کسی کمپیئر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی شاید کسی سے کم ہے. بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، بہت اچھا یہ آرٹ کیلیگرافی کرتی ہے. کافی اچھا آرٹ ورک وغیرہ جو ہے، تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی آنا چاہیے. میرے حساب سے بہت اچھا ہے، یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے ہارڈ ورک کو، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کیا ہے. امریکہ میں اسلامک کیلیگرافی کے فن کے شائقین میں دلچسپی اور قدر میں مسلسل اضافہ واضح طور پر دیکھنے میں نظر آتا ہے. محسن ظہیر، چینل 5، نیو یارک.